मनमोहन सरकार पर राजनीतिक संकट है और इस वक्त तीन बड़े मंत्री चिदंबरम, कमलनाथ और मनीष तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। My colleagues Shri Kamalnath and Shri Manish Tiwari and I wish to share with you certain developments since the last weekend. The President of the DMK, Shri M. Karunanidhi, wrote a letter to the Prime Minister on the Sri Lanka issue with particular reference to the resolution that is under consideration by the United Nations Human Rights Council, the UNHRC. Shri A.K. Antony, Shri Ghulam Nabi Azad and I visited Chennai on 18/3/2013 to discuss the contents of the letter with Shri M. Karunanidhi and his senior colleagues. As you're aware, and as disclosed by Shri M. Karunanidhi, the DMK urged the government to bring amendments to the draft resolution before the UNHRC and also to take steps to bring a resolution to be adopted by Parliament. We returned to Delhi late on the night of 18/3/2013. On the morning of 19/3/2013, Srimati Sonia Gandhi addressed the Congress Parliamentary Party and stated, inter alia, I quote, "The plight of Tamils in Sri Lanka is very close to our hearts. Our support for their equal rights and equal protection of the laws to them has been unwavering since the days of Indira Ji and Rajiv Ji. We are most pained at the manner in which their legitimate political rights continue to be denied to them. We are anguished by reports of unspeakable atrocities on innocent civilians and children, especially during the last days of the conflict of 2009. That is why we demand an independent and credible inquiry into the violation of human rights in Sri Lanka." Unquote. Shortly thereafter, at about 10 a.m., the core group met to discuss the outcome of the meeting in Chennai. It was decided to formulate amendments to the draft resolution before the UNHRC. It was also decided to consult political parties on bringing a resolution to be adopted by Parliament. Even as the meeting was underway, the media reported that Shri M. Karunanidhi had announced that the DMK would withdraw its ministers from the government and would withdraw support to the UPA. He also stated that if Parliament adopted a resolution before the end of the current sittings, the DMK would reconsider its decision. We are not aware of the reasons why the DMK changed its position between the night of 18th March and the morning of 19th March. Nevertheless, government began to formulate amendments to the draft resolution before the UNHRC. The amendments were finalized yesterday. India's permanent representative to the UNHRC is in Delhi for consultations. He will be given suitable instructions to move the amendments at the meeting of the UNHRC. A section of the media has reported that India worked with the United States to dilute the text of the draft resolution. This is a canard. The story is stoutly denied. India's position has always been and remains that the UNHRC should adopt a strong resolution that would send a resolute message to Sri Lanka and goad Sri Lanka to accept an independent and credible investigation. On the issue of a resolution to be adopted by Parliament, my colleague, the Minister of Parliamentary Affairs, Shri Kamalnath, began consultations yesterday with the political parties. Opinion on the matter is divided. The consultations are continuing and it may be possible to reach a conclusion only later today. The core group and other senior ministers met several times yesterday to review the situation. Even as another meeting was underway late last night, DMK leaders met the President of India and gave a letter withdrawing support. We are not aware of the reasons why the DMK changed its position between the morning of 19th March and the night of 19th March. In the meanwhile, the Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter dated 18th March to the Prime Minister, urging that India should move amendments to the draft resolution before the UNHRC.
As far as the government is concerned, our position is that we intend to move amendments to the draft resolution before the UNHRC. We will also continue to consult political parties on bringing a resolution to be adopted by Parliament. I wish to just say a few lines in Tamil. 18ஆம் தேதி இரவு திரு அந்தோனி, திரு குலாம் நபி ஆசாத் மற்றும் நான் சென்னை சென்று திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் திரு கலைஞர் அவர்களையும் அவருடைய சகாக்களையும் சந்தித்தோம். அந்த சந்திப்பின் இறுதியில ஐநா மனித உரிமை கழகத்தில் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்துக்கு அரசு திருத்தங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். அதுவுமன்றி நாடாளுமன்றத்திலே அனைத்து கட்சிகளும் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தார்கள். அந்த கோரிக்கைகளோடு நாங்கள் 18ஆம் தேதி இரவு நள்ளிரவை ஒட்டி டெல்லி திரும்பினோம். 19ஆம் தேதி, அதாவது நேற்று காலை 9:30 மணிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திலே திருமதி சோனியா காந்தி அவர்கள் உரையாற்றி இலங்கை பிரச்சனையிலே, குறிப்பாக இலங்கை தமிழர்கள் பிரச்சனையிலே காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை மிக தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லி அங்கு நடந்த வன்முறை, வன்கொடுமைகளுக்கு ஒரு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சொன்னார்கள். அந்த உரை பத்திரிகைகளிலே வெளியாகி இருக்கிறது. அவர்கள் உரையாற்றிய பிறகு 10 மணி அளவிலே பிரதமர், காங்கிரஸ் தலைவர் மற்றும் மூத்த அமைச்சர்கள் சந்திப்பு தொடங்கி பல முறை நேற்று சந்தித்தோம். 2 விஷயங்கள். ஒன்று, மனித உரிமை கழகத்தில அந்த தீர்மானத்திலே திருத்தங்களை கொண்டு வருவது. இரண்டாவது, மற்ற அரசியல் கட்சிகளை சந்தித்து பேசி நாடாளுமன்றத்திலே ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியுமா இல்லையா என்பதை ஆராய்வது. அந்த கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தன்னுடைய ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டதாக செய்தி வந்தது. இருப்பினும் எங்கள் கூட்டங்கள் தொடர்ந்தன, கலந்த ஆலோசனைகள் தொடர்ந்தன. மனித உரிமை கழகத்தில் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்துக்கு எந்த திருத்தங்களை கொண்டு வருவது என்பது நேற்று மாலை முடிவு செய்யப்பட்டது. நம்முடைய பிரதிநிதி ஜெனீவாவில் இருப்பவர் டெல்லி வந்திருக்கிறார். அவருக்கு உரிய வழிமுறைகள் தரப்பட்டு அவர் மீண்டும் ஜெனீவா சென்று அந்த திருத்தங்களை அங்கே முன்மொழிவார். இதற்கிடையே நாடாளுமன்ற விவகார அமைச்சர் திரு கமல்நாத் அவர்கள் மற்ற அரசியல் கட்சிகளை கலந்து ஆலோசிக்க தொடங்கி இருக்கிறார். சில கட்சிகளோடு பேசியிருக்கிறார். நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதை பற்றி 2 கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. இன்றும் அவர் மற்ற கட்சிகளோடு கலந்து பேசுவார். இன்று மாலைதான் அதை பற்றி ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும். நேற்று இரவு பிரதமர் இல்லத்தில் ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த போது திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து தங்கள் ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டதாக கடிதம் கொடுத்ததாக செய்தி வந்தது. 18ஆம் தேதி இரவுக்கும் 19ஆம் தேதி காலைக்கும் இடையே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை ஏன் மாற்றிக்கொண்டது என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. அதை போல நேற்று காலைக்கும் நேற்று இரவுக்கும் இடையே தங்கள் நிலைப்பாட்டை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன் மாற்றிக்கொண்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அரசை பொறுத்தவரையில் 2 விஷயங்களிலே தெளிவாக இருக்கிறோம். ஒன்று, மனித உரிமை கழகத்தில அந்த தீர்மானத்திலே திருத்தங்களை, உரிய திருத்தங்களை கொண்டு வருவது, அது முதல் விஷயம். இரண்டாவது, நாடாளுமன்றத்திலே உள்ள அனைத்து கட்சிகளையும் கலந்து ஆலோசித்து நாடாளுமன்றத்திலே தீர்மானம் நிறைவேற்ற முடியுமா இல்லையா என்பதை ஆராய்வது. இந்த 2 விஷயங்களே அரசு தெளிவாக உறுதியாக இருக்கிறது. Yes. Questions? Yes. Once the core group decided to consider a resolution, I started consultations with political parties on whether and what kind of resolution we should have. It's just not merely a resolution. The question is the content of the resolution. I was able to discuss it with some political parties, and as you know, 1 or 2 political parties have already come out publicly on their views on a resolution on this matter.
these consultations are still underway. As was said, that there is an opinion which is divided. It is important that whatever resolution, and if so we have a resolution, there is consensus, or at least good consensus in the House. These consultations are on. I propose in the next few hours to continue with these consultations, and on there being some kind of a consensus. Obviously, some parties will say they don't want it. Somebody will say, if we have it, we're going to have this content. Somebody is going to say that let's have it with any content. This will continue. These consultations will continue for the next couple of hours, and then the core group will take a decision on this matter. I will report back to the core group the result of the consultations, and we'll have a decision thereafter. The press has reported that the government is shaky, the government is lame duck. I want to reiterate, the government is neither lame, neither the government duck. We are not a lame duck government. We are absolutely stable, and if there's any test, I want to reiterate, the government is neither lame, neither the government duck. We are not a lame duck government. We are absolutely stable, and if there's any test, the test is on the floor of the House. No political party has come out challenged the majority of this government. That is very clear. So I want to reiterate that we are a stable government, and we continue with the work we have been doing, continue with all the policy decisions we've been taking, and which we have to take. I wanted to reiterate that. मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट पूरी तरह स्थिर है. कोई शक शंका किसी को इस बात पर नहीं होनी चाहिए. हाउस में, सदन में किसी ने इसे चुनौती नहीं दी, किसी ने हमारी बहुमत को चैलेंज नहीं किया, और हर प्रकार से स्थिर है. कोई परेशानी का प्रश्न नहीं है, और जिस प्रकार हमारा कार्य चल रहा था, ये कार्य चलता रहेगा. The question is whether we should have a resolution. As you know, the BJP said that we don't want a country specific. You shouldn't name any country. If you don't name any country and you have a resolution in the context of the situation, the UNHRC discussions taking place in Geneva and the subsequent vote, then what is the resolution? There are issues of what should be the words used. There are issues on language, on some of the calls which a resolution would obviously contain. So these are issues which political parties have diverse opinions. Let's go one by one. Let's go one by one. Just let's go. I'll call it. Yes, please. For example, Sharad Pawar, we are told, is not very happy with the country-specific resolution. So how are you going to be at least convincing your own allies? First, you have to convince them, at least the ones that are remaining, before you go to the opposition. And also, what is the language of the resolution likely to be? I know you are consulting political parties, but the fact is it likely to be on the same lines as the US resolution, or is it going to be a little stronger, which is what the DMK is demanding? Well, when you talk of Mr. Sharad Pawar, I've had a meeting with him. He has some views on it, but he did reiterate to me that he'll go along with the government on whatever decision is taken. He has expressed some views, and where the question of content is concerned, that is why we are having consultations. That's precisely the reason we are consulting political parties. And once these consultations, as I said, whether to have a resolution, then the content, these are two different things. Once these have been discussed, then only we'll move further on it. Just 1 minute, please. மத்திய நிதியமைச்சர் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கும். இலங்கை இறுதிக்கட்ட போர் நடந்த போது தமிழகத்தில் கருணாநிதி முதல்வராக இருந்தார். அப்பொழுது
இப்ப இருந்து நடைபெற்ற கொடுமைகள், மனித உரிமை மீறல்கள், போர்க்குற்றங்கள்லாம் அப்ப அவருக்கு தெரியலையா? இப்ப காங்கிரசுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுத்த வேண்டும் ஒரு காரணத்தினாலோ, அல்லது தேர்தல் நெருங்குவதனால 2004க்கு முன்னாடி என்டிஏலேருந்து திரும்பி வந்த போது இப்ப காங்கிரஸ்ல இருந்து வெளில வரத்துக்கு அவர் காரணம் கண்டுபிடித்து வெளில வந்திருக்காரா? இந்த இலங்கை தமிழ் விவகாரத்துல தமிழக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசை ஏன் மத்திய அரசு இதுவரை கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை? திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசியல் குறித்து கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் என்னால் இப்பொழுது பதில் சொல்ல இயலாது. நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த கடிதத்துல மனித உரிமை கழகத்துல கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்துக்கு உரிய திருத்தங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் அந்த கடிதத்தையும் பரிசீலனை செய்து உரிய திருத்தங்களை வரைந்து கொண்டிருக்கிறோம். The question was, why have you not consulted the Chief Minister of Tamil Nadu? It's not entirely correct. The Chief Minister, as I said, has written a letter. The letter requests that government should move amendments to the draft resolution UNHRC. We are drafting those amendments. Once those amendments are finalized, of course we will share it with the Chief Minister of Tamil Nadu. Yes, Nandita, please, just a moment, just a moment. Just a moment, please, just a moment. Yeah. Has just made a statement in Parliament saying that the Congress does not know how to treat its allies, and you need to introspect. Aren't you worried that now you're dependent on the whims and fancies of the SP and BSP? The question of whims and fancies, whenever you are in an alliance, whether it is pre-poll or post-poll or any kind of an alliance, you do have to consult and engage with all your allies and supporters all the time. So that's a fact of life. It's that we were 207 or 208 is not happened today. This was on day one, and we did build our numbers, which we continue to have, based on some alliances which were pre-poll and some which were post-poll. Yes, Karthikeya, please, just a moment. Just a moment, please. Please have patience. Understand that we are concluding the 9th year of the government. We have run an alliance for 9 years. Therefore, I think obviously there's some talent available within the government to run an alliance. Yes, Karthikeya, please. With DMK, and one question to you, sir, that Ram Gopal Yadav has also said that Vajpayee's tenure gave a good government, barring the episode of Gujarat. Well, as has been said, we've run for 9 years, and no doors are ever shut. Doors and windows are always open with everybody. So that is a situation in any parliamentary democracy. Where what Ram Gopal Yadav has said is for him to comment upon, but whether he finds the BJP good or bad, I do not know what he said, so I don't want to comment on it. Swaraj, please. Just a moment, please. Please, Himanshu. Wait. So the demand for a resolution in Parliament essentially has come from the DMK, but now that the DMK is no longer part of the UPA, is there a need for the resolution to be moved at this stage also after the DMK has left? Because as you're saying that there is no unanimity among the political parties on such a resolution. So now does it mean, I mean, since you've also spoken in Tamil, does it mean that the Congress itself is trying to address the Tamil Nadu voters there on this issue and sort of try and link yourself to the issue as well? Political parties, every political party represents a section of the people. There are people in Tamil Nadu, there are Tamils in Tamil Nadu, outside Tamil Nadu, there is a Tamil diaspora around the world. And therefore, whatever the Congress does, this has been our position since the days of Indiraji and Rajivji. We have always stood by the rights of Tamils. Equal protection of the laws and equality before the law. Now, if the Tamil sentiment has to be reflected in Parliament, it can only be reflected through an appropriate resolution.
But as my colleague rightly and pointed out, whether we should have a resolution and what is the content of the resolution are matters that are under discussion. Since somebody has raised the subject, discussions were started yesterday. The discussions have not concluded. It's only later in the day we would be in a position to say whether we will have a resolution, and if so, what will be the content of the resolution. No, but since DMK has pulled out, is it at this It's nothing to do with the DMK raising it or DMK pulling out. The question is, should the sentiments and the anguish of the Tamil people be reflected in a resolution? That's the question. It was articulated even in the Congress President's address to the Congress Parliamentary Party yesterday, which has been reflected in the statement. हमें डीएमके के लिए ये रेजोल्यूशन की बात नहीं है कि डीएमके ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली तो इसलिए रेजोल्यूशन नहीं आएगा। कल से जब मैं दूसरी सब राजनीतिक दलों से चर्चा कर रहा था, मैंने उनसे ये बात कही थी कि ये डीएमके के कारण नहीं है, ये अलायंस के कारण नहीं है, ये है कि तमिल भावनाओं को देखते हुए क्या हमें ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए और अगर लाएं तो किस प्रकार का होए। तो ये बात डीएमके से जुड़ी हुई नहीं है। मेरा एक सवाल है, No, I think you're bringing in unnecessary issues. I will only use the word unnecessary. We are discussing a serious issue. The issue of the views of 8 crore Tamil people, which is being expressed in various ways, including demonstrations and protests by students. And I do not think it's fair to bring in other issues into the issue that is now under discussion, namely the Sri Lanka issue. Yes. सर जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने Just Sanjay, please, let's give somebody else a chance. Sir, after the withdrawal of support by DMK, sir, how comfortable government will be to forward its legislative agenda in the parliament, particularly on reforms like land acquisition bill, food security bill, or FDI insurance and the pension sector? And a hypothetical question: will you favor early polls in case you fail to push your legislative agenda? Only yesterday we passed a very, very important bill, the Criminal Law Amendment Bill. Only yesterday. And today I'm confident that the Rajya Sabha will return the appropriation bill and the Jharkhand budget will be returned by the Rajya Sabha. We have a legislative agenda lined up. The Minister of Parliamentary Affairs has legislative business for the next couple of days. All these bills are necessary for the country. All these bills are necessary to take the economy forward. And I'm sure on the merits of each bill, there will be enough political parties who will come forward to support the government and pass the bills. We have no doubt that each one of these bills stands on its own merit and will be passed on its own merit. Aditi, please. Just 1 minute, I'm coming to Aditi. Aditi, please. Some within the government also are suggesting that perhaps the timing of the DMK is suspect, given that the voting in the UNHRC is only on the 22nd of March. So why now? So many questioning whether this is just getting ready for early elections, given that some of our allies have pulled out and some who are still there, whether outside the government as well, are asserting themselves more. That's not correct. That's not correct at all. That's all I can say very briefly. Minister, देखिए, सहयोगी को सरकार में लाने का भी प्रश्न नहीं उठा है। अगर कोई आना चाहेंगे हम चर्चा करेंगे, पर ये जो आपने छवि की बात करी, इमेज की बात करी, ये भी सही नहीं है, क्योंकि छवि सरकार के कार्यों से होती है, सरकार की नियत और नीति से होती है, और इसकी पहचान आम जनता में है। तो हमें इस बात की इमेज खराब हो रही है क्योंकि डीएमके चली गई, डीएमके ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली, मैं नहीं मानता इसका कोई संबंध है। Mr. Chidambaram, I have a question about what my colleague asked in a slightly different way.
you are now on more crutches than you were previously. And person on more crutches is usually more weak. So I'm just wondering if, and foreign investors and others are also asking us and others, whether the appetite for reform in government is now dulled, not just through the legislative route, but also the, you yourself said that FDI caps are going to be increased in some sectors. There are going to be other things that you're going to do. It's true that you have a numerical majority, but you don't, you are weaker than you were previously. This is a wrong perception. Government functions through making laws as well as through executive action. The division between making laws and executive action is quite clear in the Constitution. Now, we are in government. We have a duty to steer the ship, even if there is a mild storm in the sea. And we have our hand firmly on the wheel. We will continue to take decisions. We will continue to push for legislation. Only yesterday, the cabinet cleared the food security bill. Now, if you think that the government is weak, do you think we could have pushed the food security bill yesterday? The bill will be introduced in Parliament, and I'm absolutely confident, as I said to an earlier question, there will be enough support in Parliament to pass each bill, because each of these bills stands on its own merit and deserves to be passed on its own merit. As far as executive action is concerned, only this morning, the ministers approved disinvestment in SAIL. So we are taking executive action. We are pushing bills. I don't see us as any weaker today than what we were yesterday. Yes, it's true, one ally has withdrawn support. But as my colleague said, the government enjoys majority and the government will continue to do its duty. The government will continue to take executive action and the government will continue to push for legislation in Parliament. See, this question doesn't arise. As my colleague said, we have a majority in the House, we are a stable government, and nobody has questioned our stability, except voices in the media, and don't add your voice, that's what I can say. Yes, Sanjay, please. एक सवाल है, आप कमलनाथ जी ने भी कहा कि मनीष जी लेम डक हमारी सरकार नहीं है। कल से आप लगातार कहते आ रहे हैं कि आंकड़ों के लिहाज से हम बहुत स्टेबल हैं, लेकिन जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं 10:30 बजे का समय दिया गया है, 500 मंत्री भी अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है जो कि आपसे करना चाहूंगा, वो ये कि क्या किसी प्रादेशिक दल के इंसिस्टेंस पर आप विदेश नीति में चेंज करने को तैयार हैं, जैसा कि आप करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके पहले आपको जरूरत नहीं पड़ी थी श्रीलंका के मामले में यूएन में एक रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने की, पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपके दरवाजे नए दोस्तों के लिए खुले हुए हैं? देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, बहुत साफ तौर से ये बात निरंतर और लगातार कही गई है कि जहां तक भारत की विदेश नीति या कूटनीति का सवाल है, जो भारत का राष्ट्रहित है उसको सामने रखते हुए हम फैसला करते हैं। पर कहीं पर अगर ये जरूरत पड़ती है कि भारत के किसी प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और उसको उजागर करने की जरूरत है, तो एक संवेदनशील सरकार होने के नाते ये भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है और उसके ऊपर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अब सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन एक ऐसा बिल है जिसमें दोनों मुख्तलिफ राय रखती हैं। जो नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, इस पर सरकार क्या करेगी? और दूसरा, समाजवादी पार्टी का अब साफ कहना है कि बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा सरकार को लेना होगा, तो बेनी प्रसाद वर्मा का क्या होगा? बात परसों उठी थी बेनी प्रसाद जी की, मैंने सदन में इसमें खेद व्यक्त किया था और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। मेरी कल चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था हम संतुष्ट हैं, तो ये मामला अब क्लोज है। आज उन्होंने फिर बोला है कि बेनी प्रसाद वर्मा का इस्तीफा दीजिए, ये मामला अब क्लोज है, जो मेरी उनसे चर्चा हुई है। और जहां तक प्रश्न है आपका किसी प्रकार की बहुमत का भी जो प्रश्न उठा था, किसी ने ये मांग नहीं करी है कि या किसी ने ये आरोप नहीं लगाया है सदन में या सदन के बाहर कि हमारी सरकार की बहुमत नहीं है। तो इसको कई दफा मैंने दोहराया, कल दोहराया, आज दोहरा रहा हूं कि जब किसी ने नहीं ये बात कही, ये प्रश्न नहीं उठाया, इस प्रश्न को हम खुद उठाएं
और हम खुद साबित करना चाहें, इसकी आवश्यकता नहीं है। जहां तक नौकरी को प्रमोशन, देखिए हमेशा चर्चा होती है और बहुत सारी चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, संविधान में संशोधन का बिल है, उसमें लगभग सर्वसहमति की आवश्यकता होती है, लगभग। तो जब तक सर्वसहमति या वो बहुमत नहीं बन पाए, ये नहीं हो पाएगा। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम इसमें कोशिश करेंगे, हम प्रयासरत हैं और हम करते रहेंगे। Yes, Akanksha, please. The evaluations in April, political instability is possibly the last thing that is required for a slowing economy. Are you afraid that the good work of fiscal consolidation will be undone by the situation of political instability? My second question is not that if you anticipate early elections or not, but are you prepared for early elections? See, firstly, there is no political instability. So the premise of your question is wrong. Secondly, only last week, one of the agencies said that the threat of downgrade has receded a lot and in fact hinted that there could be a possible upgrade. As far as fiscal consolidation is concerned, Prime Minister and I have made it clear that we are on the path of fiscal consolidation. The path we have laid is a path from which we shall not waver. We will adhere to whatever we have said in the budget, that in the year 2013-14, the fiscal deficit will be brought down to 4.8. So I don't think anything of that has changed or anything of that will change. Last question. Yes, Supriya, please. So even though you have reiterated your commitment to fiscal consolidation, but investors have been very wary of the political developments in India. In the last 24 hours, we saw the markets react the way they did, completely nosedive. What would you want to tell investors? Because your big pitch to them has been to come to India and invest here, and now they're looking at political uncertainty. I'm sure you want to soothe and trade nerves there. You're using a different word, uncertainty. So let me reject that word also. There's no political instability, there's no political uncertainty. Now, yesterday's market trends were a reflection of what happened in Cyprus and the market's reaction to the RBI's announcement. Why do you attribute all that to the withdrawal of support by one ally? There is no political uncertainty, and I will continue to meet with investors, and I'm confident that we will continue to pursue investors and persuade investors to invest in India. You will find that investment continues to flow into India. तो तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आई। पहली बात, डीएमके ने अपना रवैया क्यों बदल लिया, ये सरकार के मंत्रियों को पता नहीं है। जब चेन्नई बात करके लौटे थे तब तक लग रहा था कि सब कुछ संभला हुआ है। दूसरी बड़ी बात, अभी भी हम लोग संसद में जो रेजोल्यूशन लाना है, प्रस्ताव लाना है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव आना है उसमें क्या संशोधन लाने हैं उस पर भी ड्राफ्टिंग चल रही है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। यानी सरकार ने अभी भी रास्ता खुला रखा है बदलाव करने का दोनों ही परिस्थितियों में। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो साफ तौर पर चिदंबरम और कमलनाथ ने जिसको दोहराया भी, कि हम जो प्रस्ताव संसद में लेके आ रहे हैं इसका डीएमके से कोई लेना देना नहीं है। सवाल पूछा गया था कि डीएमके अब सरकार के साथ नहीं है तो अब इस राजनीतिक प्रस्ताव की क्या जरूरत है। तो चिदंबरम साहब ने साफ कहा कि यह प्रस्ताव 8 करोड़ तमिल भावनाओं के लिए है जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर तमाम तमिल्स हैं, और ये लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव आए जिससे तमिलों को सुरक्षित महसूस हो सके, तमिलों को गर्व महसूस हो। उसलिए इस तरह का प्रस्ताव लाने की जरूरत है और हम अभी प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संसद में जो प्रस्ताव लाना है उस पर कंसल्टेशंस का दौर आज दिन भर चलेगा। कमलनाथ ने साफ कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि इसमें किसी देश का नाम आए, यानी श्रीलंका का नाम आए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों को मौका देंगे कि वो हमारे खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव अपनी अपनी संसद में पास कराकर एक मुसीबत हम मोल ले लेंगे। लेकिन क्या प्रस्ताव की भाषा हो, कौन कौन से फ्रेजेस उसमें जोड़े जाएं या नहीं जोड़े जाएं, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। बार बार कमलनाथ ने एक बात को दोहराया कि हमारे पास नंबर्स हैं, हम लेम डक गवर्नमेंट नहीं है। एनसीपी के साथ हमारी बातचीत हुई है, शरद पवार हमारे साथ हैं, और किसी ने भी आपको चुनौती नहीं दी है कि हम अपने नंबर्स प्रूव करके दिखाएं। तो बात आती है तो वो भी करके दिखाया जाएगा, लेकिन हमारे पास फिलहाल पूरे नंबर्स हैं और सरकार स्थिर।